Good afternoon, everyone. So, in the today's class, we are going to talk about the last topic of the population. I think because we have completed almost all of the aspects of the population, right? Growth, shift, stability, dynamicity. What is the stability? That means population stable on the basis of the age parameter. So many factors, right? Suppose that the question comes like why the population becomes stable or something like that. So there are multiple factors. Okay. So we have heard that one of the factor is your age pyramid, like distribution of individuals in that different age groups in any population, right? So we have seen that population age pyramid, and then second most important thing is the resources. Okay. So when we talk about the resources, then we talk about the multiple things: carrying capacity, competition, this and that. Okay. So that means and dynamicity. Dynamicity when we talk about that means majorly dynamic matlab if the population is changing or not. So again, here are mainly population dependent on mainly the growth rate or the change or the dynamicity of the population mainly dependent on the four factors. That is your natality, mortality, and immigration and emigration. When you're talking about the natality, you can connect it with the topic of the age pyramid. Okay, as soon as you're connecting the topic of the age pyramid, then you'll talk about that. देखो, हाँ, natality we will talk about the age pyramid, and the second point again you can talk about the resources, right? Such as when we talk about the sigmoidal shape of growth curve, what we have seen that sigmoidal shape of growth curve is ऐसा increasing, ठीक है? Increasing what up till the reaching of carrying capacity or the resources, ठीक है? So that is something you need to know from whatever the content we have covered. You can write the answer accordingly. Got it? Chalo. Anushka does not. You are not coming. What happened? Exams चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के. चलो. So now we are going to talk about the population. Population interactions. Population interactions. ठीक है? देखो, वैसे तो we know that we have covered about after the population we have covered the क्या कहते हैं community. We'll cover the community. As we are talking about the community have the various aspect. ठीक है? देखो, यहाँ पे we are talking about that population of two different species. Yes, it can be the community, but here we are separately talking about the two different population. When we talk about the community, what is exactly different? Then we talk about the ecotone, edge effect, right? Such as what is ecotone? The transition zone of between two different types of population, है ना? जैसे कि ecotone में हम लोग बात करते हैं the coastal areas. So coastal area has a population, not even a single species, but overall. Okay, so in the larger respect, we'll talk about the community. Suppose that here, if we're talking about the population interaction, the type of mutualism, commensalism, you know, competition. Whenever we're talking about that means we're talking about the almost population of the similar kind of habitat or similar kind of area. But as soon as we are going to talk about the community, so in the community we're talking about the one population, one type of climatic zone population. That overall, suppose that if we talk about that land or the forest ecosystem, है ना, forest की जो है और जो आपका क्या कहते हैं कि coastal areas हैं वहां पे, and there's again the different is your aquatic area. So that is the difference. ठीक है, चलो. So majorly आपके कितने हैं? Five type of population interaction है. कौन कौन से हैं वो?
Okay, so majorly okay. So majorly there's a five type of interaction in the population. On what basis we are talking about the interaction? Okay. So interaction, suppose that we, as a human, है ना, we are also interacting with so many people, with so many other populations. जैसे कि we interact with the cow as a domestication, we interact with the dogs, we interact with some of the parasites. So parasite is also a population. We are also as a population. So in such kind of interaction, there are two types of conclusion. Either the, like why they do interact, because overall we talk about the ecology mein when we have talked about, it is a study of both interaction between the biotic factor and abiotic factor with each other and intra, like ऐसा नहीं है कि only we have to talk about that which type of temperature is impacting, or in the which type of climatic condition only simple organism is living. No, that is not only the ecology. Ecology is also about that what other animals, like how the prey predator, right? So in that particular ecosystem or the ecology, if the number of prey is increasing, that how it is impacting the predator. Yes, resources will be the matter. जैसे कि when we have talked about the grassland, rabbits and foxes, ठीक है? So यहाँ पे if we talk about the resources, about suppose that the resource in the basic sense of the resources, that is your food, है ना? And food, suppose अगर grasses है, तो ग्रासेस हैं, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और क्लाइमेट पे वो आपका अबायोटिक फैक्टर हो गया. On the basis of that, the grasses are growing. Yes, that is one of the factor. But as soon as we are going to talk about यहाँ पे the relationship between the prey and predator, like if the number of prey is increasing, the how the predator is impacting, how the predator is impacting, how the prey population is increasing and decreasing. That means every kind of interaction gives two type of relation, majorly either the positive or the negative, right? Such as suppose that if you talk about the coral reef, है ना, तो कोरल रीफ में देयर इज अ सीलन ट्रेड प्लस देयर इज अ फ्लोरा एंड फौना, मतलब दोनों हैं. So animals, what do the animals do? Animals do not have the photosynthesis, they do the coloring, right? They do a kind of habitat. And plants उसमें जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका photosynthesis प्रोसेस करते हैं. या सिंपल एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, that is your termite. Termite is a proper animal. It feeds on the cellulose, your wooden or generally soil, है ना. So we know that in the gut of the termite there's a protozoa lived named the trichonympha. Trichonympha and termite, why they are living on each other? Like trichonympha is also getting benefit because it is getting food inside the gut system of the termite, and termite is also getting benefit by the helping in that trichonympha is helping in the digestion of the cellulose. So both are getting positive benefit. Okay, this is also type of interaction. Okay, so this is also type of interaction where one organism living into another body. And if we talk about suppose a parasitism, so we know that various kinds of parasites, है ना, we have covered already. Suppose that if we talk about the Vaucheria branchiofti, Vaucheria branchiofti is also a parasite, ठीक है, या very basically Plasmodium. So Plasmodium is also a parasite living inside of the body, है ना. But वहां पे when we are talking about the Trichonympha and the termite, we are not calling Trichonympha as a parasite, do we? No, because parasite is in the sense of negative, but the type of interaction are almost equal in both, right? Right. Trichonympha is also living in the gut system of the that termite. And here if we talk about suppose that any kind of parasites जो कि which is living in, suppose that that is also living inside of the human body या फिर any animal body, जैसे liver fluke is living in that liver of the sheep, है ना, या Taenia solium. Taenia solium is living in the intestine of the human body, that is almost gut system, okay. But here what is happening, that particular parasites is giving the negative impact. So in that trichonympha and termite both are having the positive benefit. That means species A and species B, in which in specific type of population interaction both are getting the plus plus. But when we talk about the same type of interaction, but in the parasites and their host relation, parasite is getting plus but the host is getting negative, right? That's why we cause the disease, and ultimately the body becomes weaker, है ना. So such type of interaction we are going to talk about. Okay, so mutualism क्या होता है, देखो,
I have seen that various people get confused between the mutualism and commensalism. Today we are going to talk about that. What is the mutualism? Acha. One more thing, whenever we say that mutualism, okay, that means, okay, what is a mutualism? Word is emerging from the term mutual, right? What is mutual? म्यूचुअल मतलब जैसे कि सपोज दैट समवन इज अ म्यूचुअल फ्रेंड, जैसे कि यू आर आल्सो फ्रेंड एंड योर फ्रेंड इज आल्सो अ फ्रेंड, दैट मींस वी आर जैसे कि म्यूचुअल एनिमी है. if person C is enemy of A also and if person C is enemy of B also, ठीक है, मतलब we have decided, है ना, we know that various terms में mutual relation, mutual चीज हम लोग वर्ड यूज करते हैं. So mutuals में क्या होता है, अच्छा, one type of interaction is plus, one type of interaction is minus, and another the most common interaction is also the neutral. Does not mean that I am getting the positive or the negative benefit. That means sometimes the one organism, the one population or the one species is getting benefit while other is having not any specific impact, neither the positive nor the negative, just neutral. That is also kind of interaction. I will justify each one of this interaction with the specific points. ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्लस एंड प्लस. Okay, जैसे कि again the example is your trichonympha and termite. Trichonympha is also getting benefit and termite is also getting benefit. Second example is pollination, है ना, pollination is also pollination through bees. So bees are getting food and flowers are getting the locomotion, like flowers are getting the movement of that nectar or the pollen grains from here to here. That is also kind of interaction. But guys, listen very carefully. So when we are saying that these two type of interaction, okay, we must have heard that one of the terminology that is called proto cooperation. Proto cooperation. What is the difference between the proto cooperation and the mutualism? I am telling you the similarities, both are getting the positive benefit, but there is a one difference. What it is? Anyone? Tali, Manisha? What is the difference between the mutualism and proto cooperation? देखो, what is the exact difference between the proto cooperation and the mutualism? Mutualism में when two species are living, two species are getting benefit with each other, they are living in a close association with each other. Example, termite and trichonympha or the protozoa. Protozoa, that is the name of termite, it is living inside of the body. Both are getting benefit, yes. But suppose that if we are talking with respect to the proto cooperation, जैसे कि again आपका pollination with the help of the bees. Bees do not live on the flower. They just come, have the nectar, they just go. Yes, both are getting benefit, but they are not living in a close association with each other. Got it? If you want to ask me the answer in a very core usme, so we can say that on the back of the whales or the big fishes, there's an orthopoda which is moved. ऑर्थोपोडा जो उसकी बैक पे वेल की या किसी की बैक पे फिशेस पे या मैमल्स जो भी आप कंसीडर करो, दे आर they are getting positive benefit like here to there to here to there, right? But whales exactly is not, मतलब whales इसमें प्रोटो ऑपरेशन में दोनों पॉजिटिव रखते हैं ना. अच्छा, अभी इसको हम लोग प्लस और जीरो में करेंगे whale का और उसका. The second example of the mutualism, sorry, the proto cooperation except the bees or the pollination, जैसे कि we have seen that some of the specific kinds of birds, है ना, comes and sit on the back or the ear of the ruminants or the milching animals, है ना. So milching animal किस पे बैठते हैं, and because वहाँ पे छोटे 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 microbes होते हैं, so जो birds होती हैं वो feed करती हैं microbes पे, which is present on the body of that buffalo maybe, है ना, जैसे woodpecker, या woodpecker नहीं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे organism, ऐसी birds होते हैं, specifically crow. You guys must have seen that crows are sitting on the back of the buffalo and some eating something from their nose, or maybe not nose, but maybe the ears, maybe the back. So वहाँ पे क्या है? Because such ruminants or such milching animals or such as buffalo are living in some of the areas, go into the ponds, है ना, go into the mud. So they carry various छोटे छोटे organism. So birds आती हैं, उनको feed करती हैं. तो इससे क्या होता है, या crow या sparrow जो भी है, तो इससे क्या होता है, they are getting food because of course static form में है, they are getting food,
बट वहां पे जो बिग एनिमल्स है, मिर्चिंग एनिमल्स, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, दैट दे आर गेटिंग प्रोटेक्टेड बाय सच इन्फेक्शन और बाय सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ आया? बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म नहीं बोलेंगे. म्यूचुअलिज्म कैन से दैट द ब्रॉडर टर्म इन विच बोथ स्पीसीज आर गेटिंग बेनिफिट. बट यहाँ पे जो बर्ड्स है, या प्लोवर बर्ड, एग्जैक्टली द नेम इज प्लोवर बर्ड. प्लोवर बर्ड डज नॉट लिव विद द एसोसिएशन ऑफ द बफेलो. ऐसा नहीं है ना कि प्लोवर बर्ड हमेशा बफेलो के सर पे ही रहती है, या इट इज लिविंग ऑलवेज ऑन द बैक. ठीक है, so that is the concept of the proto cooperation and mutualism. I hope it is clear now. ठीक है, so both are getting benefit. Commensalism में क्या है, one is getting benefit while other is having the neutral impact or the zero impact. जैसे कि अभी we have just talked about that, whales के जो बैक होते हैं उस पे क्या होता है, वो छोटा छोटा सा ऑर्थोपोड्स होता है. ठीक है, एक बेनिफिट हो रहा है बिकॉज दे कैन नॉट मूव बिकॉज दे हैव द एक्सटर्नल शेल, so they just stick on the whale. उससे whale को कोई impact नहीं होता. No, they are not the blood sucker, not at all. But if in a very extreme condition, if that particular orthopoda will grow like near the any important organ, जैसे कि मान लो lungs के पास में, या whales have lungs, yes, वहां पे, तो it may have the problem later on. बट ऐसा नहीं कि उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होता है. ठीक है, so that is a plus उस ऑर्थोपोड के लिए. एंड न्यूट्रल इम्पैक्ट, नॉट इवन अ पॉजिटिव और नेगेटिव. there's other examples too, we'll talk about it, about the whale. ठीक है, then we talk about the parasitism. पैरासिटिज्म में अभी we have just talked about, और also the prey predator relationship. ये एक बार आपका PYQ का क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. यस, prey predator relationship में suppose that prey ultimately predator will kill the prey and have it, है ना? देखो, वैसे तो when we talk about the prey predator relationship in different sense, when we talk about the evolution sense, that is almost the negative use of energy, या competition को हम लोग generally negative use of energy बोलते हैं. Ultimately parasitism और prey predator relationship in which the one species, suppose that parasites are getting benefit and hosts are getting negative impact. समझ आ गया? So that is a kind of relationship. उसके बाद आता है competition. Competition is something very important because competition is a kind of big term. So we know that on the topic of the competition, the various scientists, जैसे कि Gauss exclusion principle. अच्छा, tell me what you can think of the competition. One is like which kind of interaction it will be. Online guys, please tell me what you think, which kind of interaction about the competition. Plus plus, plus minus, minus plus, minus zero, plus zero, whatever the interaction you can think of. Ashali, Anisha, tell me bacha. Minus, minus, okay. Actually very good, that's absolutely correct. Okay. Yes, exactly. Very good. देखो, competition is actually negative. But you can say, ma'am, the competition में one will get win. Yes, competition में one will get win. Suppose that if I am like, suppose that there are one of the food resource. ठीक है? एक कोई food resource है. Suppose that there's a one rasmalai or something, one chocolate, and there's a one person. ठीक है? And there's a one person. That person will come and have the chocolate. So that person need not to invest or use any kind of energy to getting the benefit, to getting the eat or the benefit of the chocolate, obviously, because there's no competition. But suppose that there's another person came again, okay, so वो कह रहा है, no, I also want that chocolate, and then ultimately it has been decided that chocolate will get only by those people, those persons. Suppose that A है, ठीक है, then B है, then C है, then D है. Now more competition, like means various competition, like various people are or the individuals are involved in that. ठीक है, so in that sorry, if you try to understand in a very realistic scenario, है ना, आपके इकोसिस्टम में या आपके वहां एनवायरमेंट में there are multiple things which are a common resource for various number of people. Competition is one that kind of interaction. देखो, अभी तक हमने जितने इंटरेक्शन पढ़े हैं, मोस्टली दे आर इंटर स्पीसीज, लाइक बिटवीन वन डिफरेंट स्पीसीज अनदर डिफरेंट स्पीसीज, है ना. बट कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ दैट इंटरेक्शन विच इज अकर इन बोथ इंट्रा एंड इंटर. जैसे कि इंट्रा में क्या है, इंट्रा कॉम्पिटिशन मतलब suppose that the habitat, right, the food, right, then the very basic, the reproductive competition. There's a one female, so we know that the concept of the species is a intra breeding. ठीक है, मतलब species में क्या होता है
कि दे कैन इंटरबीट विद ईच अदर, ठीक है। तो जो आपका फीमेल कंपटीशन होता है या जो आपका रिप्रोडक्टिव कंपटीशन होता है वो मोस्टली आपका मतलब मोस्टली नहीं, हमेशा ही आपका ऑलमोस्ट इंट्रा स्पीसीज में होता है। सो अगर सपोज दैट ये 4 पीपल हैं, देयर आर 4 पीपल, नाउ दे हैव टू फर्स्ट compete विद ईच अदर। दैट मीन्स यहाँ पे when they are competing, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द हॉर्न्स और ग्रोथ ऑफ दैट काइंड ऑफ हूफ, है ना, इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअली अट्रैक्शन, या तो दिस इज आल्सो इंटरेक्शन, ठीक है। जो जनरली डियर्स होते हैं या जो बारहसिंगा होते हैं, तो उनमें क्या होता है, दिस इज अ बिग हॉर्न्स ऑन दैट काइंड ऑफ वो, तो दैट इज अ काइंड, जैसे कि पिकॉक, पिकॉक में क्या होता है, एज ब्यूटीफुल एज द फेदर विल बी, द फीमेल दे विल ट्राई टू शो द डांस, है ना, एंड देन फीमेल विल गेट अट्रैक्टेड। सपोज दैट अगर तो जो ब्यूटीफुल कलर बनाने के लिए, दिस इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, सो टू मेक दैट ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द फेदर्स, है ना, बॉडी का कुछ जो आपने रिसोर्स लिया है या फिर जो भी आपने फूड लिया है, अगर सपोज दैट अ पीकॉक इज नॉट हैविंग दैट वेरी गुड अमाउंट ऑफ फूड, डू यू रियली थिंक कि उसकी जो फेदर्स है वो इतने अच्छे डेवलप होंगे? नहीं, ठीक है। सो कंपटीशन और द लॉस ऑफ एनर्जी इज नॉट ऑलवेज इन दैट एक्सटर्नल फॉर्म, इट इज ऑल्सो इन इंटरनल फॉर्म, ठीक है। या जो ग्रोथ ऑफ द डव, जैसे कि वी सपोज दैट स्टार्ट रेजिंग, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि सपोज दैट ये जो फूड खा रहे हैं, so that means to grow that horns, to grow that feathers, इसमें आपका फूड का रिसोर्स आ रहा है, अल्टीमेटली इज दैट एनी यूज ऑफ इट? नो, इट इज ओनली फॉर द कंपटीशन। अगर सपोज दैट यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, सो देयर आर ओनली 2 पीपल, दे विल जस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर बहुत कम, लाइक फीमेल मेल या रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में या फिर सिंगल रिसोर्सेज, तो उनको शायद यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दैट मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी। So competition में that is true that one will get win well, one will get involved, but ultimately both are investing their energy first of all to tackle with each other. ये एनर्जी ये अपने रिप्रोडक्शन में या फूड में डायरेक्टली लगा सकते थे, ठीक है। दैट इज व्हाई कंपटीशन इज योर बोथ नेगेटिव एंड नेगेटिव। अमेंसलिज्म इज नेगेटिव एंड जीरो। एन एग्जांपल ऑफ अमेंसलिज्म, इसमें one is getting the harm and another is getting no impact. ओके, सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल, एनिमल्स में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, प्लांट स्पीसीज में है, जैसे कि जो आपका वॉलनट होता है, ठीक है, यस, इन द टेम्परेट काइंड ऑफ एरिया। सो वॉलनट इज एक्चुअली सिक्रीट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज आस्क मी। वॉलनट की जो रूट्स होती हैं, दे सिक्रीट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एप्पल। यस, दैट्स ट्रू। दैट मीन्स जनरली देखो, तो इससे क्या हो रहा है, वॉलनट जो सिक्रीट कर रहा है उससे उसको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट उसकी रूट्स में केमिकल बनता है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म्स इन द रूट ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट सो जो रिलीज होता है, बट उस पर्टिकुलर केमिकल की प्रेजेंस में द एप्पल ट्री कैन नॉट ग्रो, सो एप्पल इज गेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट व्हाइल वॉलनट इज गेटिंग द जीरो और द न्यूट्रल इम्पैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एवरीवन ऑनलाइन क्लियर है भी? ऑल ऑफ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, एनी काइंड ऑफ डाउट? एमेंसिलिज्म में कोई कंफ्यूजन है, किसी को पूछना है? वीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एमेंसिलिज्म नहीं है। वीट वाला कॉन्सेप्ट इज अ काइंड ऑफ प्रे प्रेडेटर और पैरासिटिज्म। वीट क्या करता है, वीट टेक द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल, है ना, अननेसेसरी ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, दे कैन ग्रो एनीवेयर, ठीक है। सो दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, सो दैट सॉइल यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज इन अ लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। तो जो आपकी क्रॉप्स होती है, जो आपने इंटेंशनल ग्रो करा है, वो उनके लिए वो रिसोर्स क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इवन नॉट अ इट्स अ कंपटीशन बट द नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो। कॉम्पिटिशन में भी वैसे यूज कर सकते हो। सो बिकॉज अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन में क्यों यूज नहीं करें, बिकॉज बोथ आर नॉट इंटेंशनली, है ना, उनका इंटरेक्शन एज सच नहीं है। Weeds are just unnecessary growth. If you guys know that, I don't think ये idea, but this is about the polity. So whenever we have heard about the problems in the Indian agricultural farming or Indian agriculture sector, अगर आप लोग एक्चुअली ध्यान से पढ़ोगे और यू विल रियलाइज गाइज, देन यू विल गेट इट कि बिफोर इंडिपेंडेंस आप 1947 1950 तक आ जाओ, इंडियन एग्रीकल्चर हैड नेवर एवर द प्रॉब्लम ऑफ द वीट्स। यस, ड्रॉट का प्रॉब्लम था, ठीक है, फ्लडिंग का प्रॉब्लम था, नेचुरल, बट वीट्स का प्रॉब्लम नहीं था। सो इन दैट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट व्हेन इंडिया फर्स्ट टाइम आस्क्ड फॉर दैट वीट फ्रॉम द यूएस, ठीक है, यूएस ने एक बहुत बड़ा उस पे आर्टिकल नेगेटिव भी पब्लिश किया था, that Indira Gandhi with the ball of that ball or like asking for the beggar kind of scenario था, and Indira Gandhi well just felt कि no, that will not going to happen, but तब तक वो काम हो चुका था।
So whatever the content of the wheat was exported by the US, उसमें उसने intentionally wheats के कुछ seeds रखे थे. And after that period of time, India is facing the scenario, the problem of that wheat growing. Yes, before than that, India की soil was that good कि wheat were not able to grow automatically, है ना. तो ओवरऑल जो भी क्रॉप था, wheat की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में भाई, है ना. वीडीसाइड्स यूज करे जाते हैं. यस, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ कंपटीशन अ काइंड ऑफ. हाँ, फिर उसके बाद इंडिया में ग्रीन इकोनॉमी, सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन और सच काइंड ऑफ रिवोल्यूशन केम. समझ आ गया एवरीवन. इसीलिए यूएस में सपोज दैट व्हेनेवर यू विल गो, एवरीथिंग कैन बी अलाउड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी अलाउड. तो वहां पे जैसे कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक ही बार आपका सामान चेक होता है ना, व्हेन यू आर एंटरिंग इन दैट. ठीक है. यूएस में क्या होता है, सच एज इफ यू आर एमिग्रेंट समथिंग लाइक दैट, जब निकलते हैं तो वहां पे फिर से एक बार सामान चेक होता है. यस, जो भी आपके साथ लगेज है दैट विल अगेन. और वो कोई भी फूड आइटम ले जाने नहीं देते हैं, not at all, because like if you are going with the bananas or maybe tomato or maybe potato, they'll not even allow you to do that. वो cooked food ले जाने देंगे. Like suppose that pickles they'll allow, क्योंकि वो उसमें already वो मतलब wheat का जैसा कुछ concept नहीं रह गया. But ये चीज they are not allowing because they know that कि wheat का problem comes like that only. Yes, so that's why they do not allow it. ठीक है, चलो write it down. म्यूचुअलिज्म, इसको लिख लिया ऑनलाइन. मेक इट हेडिंग म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म, it is an obligate association of two organism or species. It is an obligate association of two organisms or species in which each one derives benefit, each one derives benefit from the other, in such interaction, full stop. In this association, both of the organisms often live together. In such association, both of the organisms plus species live together and cannot live separately. Again, I want to tell you one thing, because jitna zyada sometimes we study deeper, so we use our own brain. Suppose that prelims में, PYQs में, UPSC में, if the question comes like the relationship between the the relationship between the bees and the pollination activities, is it a mutualism? तो वहां पे आप mutualism लगाओगे. ठीक है, because we are covering the zoology, तो we know that proto cooperation, उसको हम लोग mutualism ही बोलते हैं. because यार एनसीईआरटी का जो रेफरेंस लेती है, एनसीईआरटी का यूपीएससी अप टू द क्लास 12, उसमें वो म्यूचुअलिज्म ही आ रहा है. प्रोटो कॉपरेशन वी आर कवरिंग बिकॉज वी आर कवरिंग इनटू द डीप. ठीक है, अगर प्रीलिम्स में आता है तो आप उसको म्यूचुअलिज्म ही टिक करोगे. ठीक है, चलो. लिव टुगेदर एंड कैन नॉट लिव सेपरेटली. एग्जाम्पल, एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, दैट इज लाइकेन. एग्जाम्पल लाइकेन, which is the association of algae and fungi. Lichen, which is the association of algae and fungi, in which both algae and fungi, या फिर ऐसे in which both get benefit from each other, in which both get benefit from each other as both get benefit from each other as fungi absorb the nutrition and minerals from the hard surface because of its cell wall,
cell wall and gives protection to the association, and gives external protection to the association, while algae prepares the food because of photosynthetic activity, with the help of minerals and nutritions, on which both algae and fungi survive. Okay, so fungi is giving that external protection and also absorption of nutrition. So when we covered that ecological succession में the primary stage is actually by the lichen only. Okay, because algae देखो survive करने के लिए food is required, so producers can only be there. So survive करने के लिए the one thing is the food, and second thing is the survivability. So survivability will how? Because rock structure is something very hard, right? So how the and rock has also the phosphorus and sulfur. We know the biogeochemical cycle. Then from that rock structure or any kind of soil structure, the fungi is getting absorbing the nutrition because of its hard chitinous cell wall, and that is providing to the algae and also covering, because algae का जो algae की जो cell wall होती है that is cellulosic, और fungi की जो cellulose वो होती है that is chitinous. ठीक है, तो प्रोटेक्शन भी देती है और अब्जॉर्ब भी करती है, और algae क्या कर रही है, फूड बना रही है, so that it will both are getting फूड भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट mycorrhiza. lichen के बाद the next example is mycorrhiza. That is association of fungi plus roots of higher plants. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आपके जिम्नोस्पर्म, जैसे कि साइकस रिवोल्यूटा की जो रूट होती है उनमें ऐसे करके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें फंजाई रहती है, और इस एसोसिएशन को वी कॉल द माइकोराइजा. सेम बेनिफिट जो आपका एलिगी और फंजाई का है, सेम बेनिफिट, बिकॉज जिम्नोस्पर्म है तो ऑफकोर्स प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करेगा, और जनरली जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं वो स्लाइटली टेम्परेट या काइंड ऑफ स्नोई एरिया में ग्रो करते हैं, तो वहां पे न्यूट्रिशन ऑलरेडी बहुत कम होता है, और इफ इट इज वेरी लो, लेस इन क्वांटिटी और ऑल्सो वेरी डीप, तो ये क्या होते हैं, ये वहां से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं और प्रोवाइड करते हैं इनकी रूट्स को, so that overall photosynthesis or whatever the nutrition is required for the grow of the plant that will available. That's simple. ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें और लिख लो, एनिमल्स का भी लिख लो. a protozoa named trichonympha lives in the gut of termites, which help in digestion of cellulose on which termite feeds. Here both termites and trichonympha getting benefit from each other. अब वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में. ठीक है, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और वो उसको स्पेस दे रहा है रहने के लिए, और ऑफ कोर्स फूड भी दे रहा है. यस, दैट्स इट. इसी में स्टार बना के लिख लो, स्टार बना के सेपरेट लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटो कोऑपरेशन.
This is also the similar concept of the mutualism. This is also the similar concept of mutualism, but here both species are not living, but here both species in association in association, not living close to or inside of each other each other, but getting benefit but getting benefit by both species by both species. Example example, plover bird. Plover bird. और एक और होती है रेड बिल्ड पेकर. रेड बिल्ड पेकर और रेड बिल्ड पेकर. रेड बिल्ड पेकर, येलो बिल्ड भी होती है. feeds on the ticks and other feeds on the tick and other feeds on the ticks feeds on the ticks or other insects or microorganisms living on large animals, wild animals. Animals भी लिख सकते हैं. Large animals such as buffalo, rhinoceros, etc. In this, birds are getting food. In this, birds are getting their food while the buffalo or rhinoceros getting protection from such microorganism, getting protection or free from parasites. ऐसे लिख लो, getting protection and free from parasites. ठीक है. Another example वही इसका sea anemone and hermit crab. Plover bird, कभी-कभी you guys must have seen crocodile just open its mouth, है ना, बहुत बड़ा सा, and उसमें birds आती है and crocodile does not eat them. Yes, they do not. And eats, and like crocodile के उसमें क्या कहते हैं, teeth में whatever the small particles are stuck over there, उसपे वो feed कर लेती है. तो crocodile उनको खाता नहीं है obviously. ठीक है. तो plover bird actually example ऐसे करके लिख लो. Example, sea anemone and hermit crab plover bird and crocodile. Next big heading, commensalism. This is a co-action in which two or more species are associated. More than one, two or more species are associated
and derives benefit from such association only by the one species while other species are are neither getting benefit nor harmed nor harmed comma, just have neutral impact just have neutral impact such as epiphytes epiphytes are the plants growing on the other plants such as epiphytes जो आपके they just taking the support not having the hosterior roots. देखो दो टाइप के एपिफाइट्स होते हैं. One of that epiphytes जो सिर्फ सपोर्ट because they are the crawler or the creeper है ना, such as suppose that consider the any family of cucurbitaceae such as your yes cucumber or pumpkin है ना, or yes that kind of. So what we see because they have the very big fruits है ना, they have the very heavy fruits compared to their stems. तो उनकी stems woody नहीं होती है ना. So what they have, suppose that this is a kind of stem and they are having the big fruits. तो यहाँ पे इनके पास क्या होते हैं, this is a kind of stem. तो इसकी help के through they actually growing with the help of any plants or any kind of support. ठीक है. So यहाँ पे क्या हो रहा है, these are getting benefit. ठीक है, plus बट जो अदर प्लांट है ना उसपे कोई बेनिफिट या हार्मफुल नहीं हो रहा है, नहीं, दे डू नॉट. एक अनदर टाइप ऑफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, दे हैव दैट हॉस्टीरिया मतलब सकिंग रूट्स. They do not only get the support, Amar Bale I think something like that, yes, they do not only get the support but also they have the specific kind of roots which actually absorb the nutrition from the other plants. वहां पे ये प्लस और माइनस है. yes, that is a kind of prey predator relationship, but यहाँ पे नहीं. ठीक है, तो epiphytes growing with the support of other plants they use other हाँ ठीक है, in which epiphytes are getting benefit, in which epiphytes are getting benefit for the support, but other plants are not getting benefit nor harmed, but other plants not getting benefit nor harmed. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लिख लो. एग्जाम्पल रिमोरास एंड शार्क. शार्क्स. व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ दैट? देखो दिस इज अ जूलॉजी पॉइंट, दोनों ऑफ कोर्स जूलॉजी करें तो जूलॉजी का एग्जाम्पल होना चाहिए. वी हैव सीन दैट सम ऑफ द बिग फिशेस, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ दैट फिशेस जिनका जो माउथ होता है, दिस इज देयर आईज एंड दिस इज देयर माउथ, है ना. हमने ऐसे देखा है कि जनरली वी हैव सीन कि माउथ का जो मुंह होता है वो यहाँ पर होता है, लाइक बीच में, ठीक है. बट सम ऑफ द फिशेस हैविंग द माउथ ऑन द वेंट्रल पोजीशन. तो आपने देखा होगा सच काइंड ऑफ रील्स और सम काइंड ऑफ डिस्कवरी चैनल्स पे. तो सपोज दैट दिस इज योर शार्क, दिस इज योर बिग फिश, है ना. So they feed on large amount of food. So when they feed on large amount of food, तो some of the food particle just fallen down, है ना, गिर जाता है. बहुत बड़े एनिमल्स या जो भी कुछ खाते हैं. So यहाँ पे there's a small fishes living closely at their mouth. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ये तो फिर इसको ही खा जाएगा. Exactly. That's why I have said that they cannot see them. इनकी जो आईज होती है वो आपके डॉर्सल सरफेस पे होती है या एकदम उस पे होती है एंटीरियर पे, बल्कि जो माउथ होता है वो स्लाइट एंटीरियर और द लैटरल पोजीशन पे होता है. वेंट्रल पोजीशन पे होता है, लैटरल नहीं होगा, वेंट्रल पोजीशन पे होता है. सो क्या होता है, जो ये फूड बड़े फूड पार्टिकल्स खाते हैं, तो जो छोटे फूड पार्टिकल्स व्हिच इज फॉलिंग डाउन, दीस स्मॉल फिशेस इज नेम्ड एज अ रिमोरा, दे फीड ऑन देम.
ठीक है, तो ये क्या हो रही है, दे आर गेटिंग द पॉजिटिव बेनिफिट एंड द शार्क इज गेटिंग द नेगेटिव, सॉरी नो इम्पैक्ट, इधर दे आर गेटिंग पॉजिटिव, अब वो उसको थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होगी, ऑफ कोर्स वो तो वैसे भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सो दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट, नॉट गेटिंग हार्म. सो राइट डाउन रेमोरा एंड शार्क्स in which the small fishes in which the small fishes lives lives in close association lives in close association near to their near to the mouth of वाले भी नहीं है near to the mouth of large fishes such as sharks आई तो मेरा near to the mouth of large fishes because they feed on because remoras, yeah, small fishes feed on small food particles feed on small food particles falling down falling down from the mouth of from the mouth or a food of sharks from the mouth or food of sharks. If you want guys you can make this diagram too. जैसे सपोज दैट ये स्टेटमेंट खत्म हुआ ना, प्लीज मेक द डायग्राम, बस एक फिश थोड़ी बड़ी बना के छोटी छोटी फिश यहाँ पे दिखा देना, that's the kind of represent. Yes, diagrams enhances the marks, gives you brownie points. अगर एग्जामिनर को पॉइंट सपोज दैट आपके पॉपुलेशन इंटरेक्शन में उसको 15 मार्क्स में 15 मार्कर का ही होगा मोस्टली, अगर 10 मार्कर का हो तो बहुत कंसाइज वे में लिखना, सपोज दैट उसको अच्छा आपका आंसर लगा और वो आपको 4 आउट ऑफ 10 दे रहा है या 4.25 आउट ऑफ 10 दे रहा है, ठीक ठाक आपका आंसर है, तो वो बहुत आराम से आपको 5 आउट ऑफ 10 दे देगा. यस, बिकॉज यस देते हैं, छोटी छोटी रिप्रेजेंटेशन आप बनाते हो, जैसे एपिफाइट्स का बना दिया है ना, बीज का बना दिया, बीज का कैसे बना दिया, सपोज दैट दिस इज अ फ्लावर है ना, दिस इज अ फ्लावर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, सिर्फ बीज दिखानी है, ऐसा कोई बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बनाना होता, ये लो बीज दिख गई, ये फ्लावर बन गया, दैट्स इट, इतना ही इंटरेक्शंस होता है इसमें, ठीक है. देखो स्मॉल फिशेस लिखो, स्मॉल फिशेस आर गेटिंग पॉजिटिव व्हाइल शार्क्स आर नॉट गेटिंग हार्म, नॉट गेटिंग बेनिफिट, ठीक है. yes that one. The another example is the लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बार्निकल्स, ये ऑर्थोपोडा जो अभी मैं बता रही थी, बार्निकल्स ऑन whales lives barnacles lives on the back of whales, ठीक है, जहां पे लिख लेना barnacles are non-locomotive, so they do locomote, they have the locomotion facility with the moving whales. Yes, nutrition उनको मिलता है of course, not from the whale body, no, not from the whale body, but yes, barnacles attach to the whales and get and access the nutrient rich water. Yes, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या था, कंपटीशन कमेंसलिज्म, व्हाट वाज द नेक्स्ट, मेक इट हेडिंग पैरासाइट्स और प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, इसी में हम लोग लोड का वॉल्टेरा मॉडल साथ में ही कर देंगे. हाँ, पैरासाइट्स और प्रे प्रेडेटर रिलेशन कर देना हाँ कर देते हैं. पैरासाइट्स सबसे पहले को पैरासाइट्स, जहां पे हेडिंग डाल रहे हो ना हम लोग, सपोज दैट व्हेन यू आर राइटिंग द सर्च पॉइंट्स एंड यू आर राइटिंग द पैरासाइट्स, ऐसा करेंगे बाद में लिखेंगे, हाँ, क्योंकि लोड का वॉल्टेरा मॉडल अलग से आ रखा है पैरासाइट्स. हाँ, राइट डाउन, तो प्रे प्रेडेटर भी बाद में कर लेंगे. पैरासाइट्स it is a type of it is a type of interaction where the one species called where the one species called parasites living on the other species called hosts for the specific purposes
such as such as mainly such as mainly food and nutrition, food and nutrition, in which in which parasites take the nutrition take the nutrition from their host body and getting benefit plus while the host getting have the negative impact okay, while the hosts are getting negative impact. Example plasmodium. Example plasmodium, malarial parasite, okay, lives on in the body of their host human. Blood and liver and hosts get the disease called malaria. ठीक है, and hosts get the disease called malaria. ठीक है, next इसमें लिखो parasites mainly of two types कौन कौन से होते हैं? हाँ, क्या बोलेंगे? Ashali, Manisha, what are the two types of parasites? Ecto and endoparasites. Yes, very good. Write down ecto parasites and endoparasites. Definition क्या है? Ecto means outside. These parasites, इसमें लिख लो. These parasites live externally or on the body of their host, such as, example, anyone? Yes, very good, Manisha. Example? नहीं, उसको will not consider. They are not parasites, no? They are to giving benefits. How they are the parasites? Anyone? Dog ticks. Yes. Dog ticks. Exactly. Ticks living on the body. Leeches क्या होती है? Body में ऊपर ही रहती है. They just sucks blood. Leeches as an ectoparasite living on the vertebrates such as human and buffaloes, the animals. Leeches. LWCHES. Leeches. Lives on the body of animals or human. Another example, human lice. हिंदी में क्या बोलते हैं? जू. Lives on the root of hair. And all these three sucks the blood.
डिफाइन द एंडोपैरासाइट्स एंड राइट द एग्जांपल बाय योरसेल्फ. एक तो प्लाज्मोडियम में हो गया. सेकंड आपका क्या हो गया? कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कि आपका क्या होता है, फूड फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम, ये कहाँ रहता है आपके इंटेस्टाइन में. दिस इज योर बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया नेम क्लॉस्ट्रिडियम, इसका एग्जांपल है ये. क्लॉस्ट्रिडिया बॉटुलिनम लिव्स in the intestine of human, lives in the intestine of human and causes food poisoning. Food poisoning occur because of the various reasons too. Yes, मतलब this is one of the, हमें एग्जांपल बताना है ना. फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग. ठीक है, एक आप इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो? वाउचेरिया. वाउचेरिया तो बहुत ऑब्वियस लिख सकते हो. वाउचेरिया causing liver fluke, Taenia solium, yes, elephantiasis, yes, write down. 15 तक लिख लो 2 मिनट्स में. yes, डिफाइन करो पहले एंडोपैरासाइट्स एंड राइट द एग्जांपल. ट्राई टू जस्ट जस्टिफाई वन एग्जांपल. डन, अब तक तो हो गया होगा. Salmonella typhi, yes, very good. Salmonella typhi causes typhoid. Mycobacterium tuberculosis gives the TB. There's so many examples we can write down. Viruses का generally मत लिखना, क्योंकि viruses do not consider as a living. Yes, externally. That's why. Otherwise, you can write like that. ठीक है? चलो, एक और लिख लो parasitism में ही. The parasites can be classified into different forms. The parasites can be classified into different forms, such as first हाइपर पैरासिटिज्म, जो कंप्लीटली रहते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म. सेकेंड ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म. We already know such kind of concepts. I'm not going to elaborate it, and you guys know the examples too. Yes. Third, आप लोग try करो, नहीं आएगा तो I'll just, of course I'll be here. Next, facultative parasitism. Facultative parasitism. Fourth, brute parasitism. Brute parasitism का example anyone? Online? Example of brute parasitism? Brute. मैं हूँ Groot. Not like that. Bats. Very good. Bats are the example of the brute parasitism. ठीक है? Facultative का example, देखो bats क्या करते हैं? I'm telling you, actually bats का internally होता है. ठीक है? Brute parasitism is a kind of, suppose that those like all the bats do not feed on the blood. No, that's not true. ठीक है? Bats actually feed on the feed करते हैं. They are also feeding on the nectar. जैसे कि mosquito होते हैं, similar as a bats too. Some of the feeding on the nectar, fruits, है ना?
हमने सुना वन ऑफ द डिजीज विच इज स्प्रेड फ्रॉम द एरिया बिकॉज ऑफ द बैट्स ओनली, तो बैट्स जो आपके फ्रूट पे भी फीड करते हैं, ठीक है, गुड। तो सम ऑफ द बैट्स फीड्स ऑन द फ्रूट, नहीं, जो ऐसे बैट्स जो पे फीड करते हैं ब्लड पे, तो व्हाट दे डू, सपोज दैट देयर इज अ लाइक 3 to 4 फीमेल्स हैं, ठीक है, देयर 3 to 4 फीमेल्स हैं, ठीक है, जनरली फीमेल्स फीड ऑन द या ब्लड, दैट इज आल्सो ट्रू, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। तो इसने क्या किया, सपोज दैट इस वाली फीमेल को, दिस फीमेल गॉट द गुड अमाउंट ऑफ ब्लड, सो उनके ना बैट्स के स्टमक में देयर इज अ काइंड ऑफ पाउच, ठीक है, देयर इज अ काइंड ऑफ पाउच इन विच व्हाट दे डू, they just feed and collect the blood for the future. Yes, they are not digesting. वैसे भी we know that digestion of blood requires a specific kind of enzyme. Blood ऐसे नहीं digest होता है. Blood में yes, blood में because we know various kind of proteins are also found, albumin, globulin, and so many things. Blood digestion is not easy. Those animal which feed on what they are called sanguivorous. ना हमने कहीं तो use किया है. The those organism feed on the blood. They are called the sanguivorous. ठीक है, चलो, तो व्हाट दे डू, दे जस्ट कलेक्ट द ब्लड इन देयर ब्लड इन द ब्लड ब्रूड इन द ब्रूड, उसको बोलते हैं उस पाउच को बोलते हैं ब्रूड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रूड पैरासिटिज्म। सपोज दैट इसको भी ब्लड मिल गया, इसको भी ब्लड मिल गया, इसको ना ब्लड नहीं मिला, सो व्हाट इट विल कम टू दिस, इसके पास एक्सेस है, इट इज नॉट कि बस थोड़ा सा मिला और गुड एनफ, इसके पास एक्सेस है, सो दैट पर्टिकुलर बी विल कम टू द ए एंड विल से कि लिसन प्लीज प्रोवाइड अ लिटिल ब्लड टू मी ना, तो बोलेगा कि ठीक है, अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं, बट जब जरूरत होगी तो प्लीज रिटर्न इट टू मी, ठीक है, हमें रिटर्न कर देना। तो बोलती है ठीक है, तो अगर वो टाइम पड़ने पर सपोज दैट इफ समडे दिस विल नॉट, मे बी विल नॉट गेट ब्लड एनफ, ए सेड टू सी कि लिसन यू गो टू बिकॉज आई हैव गिवन दैट बी वंस अ ब्लड, और बी ने अगर डिनाई कर दिया, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्चुअली धोखा या चीटिंग, ठीक है, एक को बोलते हैं, और एक कुक्कू और कोयल वाला ब्रूट पैरासिटिज्म, एक्चुअली ब्रूट पैरासिटिज्म का एक्चुअली एग्जांपल आपका वो है, बट वी नो दैट कुक्कूज जनरली डू नॉट मेक देयर नेस्ट, है ना, तो व्हाट दे डू, वो जाती है, सपोज दैट कुकूज गो एंड क्रोस का, बिकॉज उनकी जो एग्स की साइज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सो वंस एनी बर्ड ले द एग्स, इट एक्चुअली सीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर एनर्जी अकॉर्डिंगली, ठीक है, सपोज दैट इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्रो ने 6 एग्स दिए, तो कुकू विल कम और वो क्या करेगी, अपना एग जो है कुकू का एग वो बीच में रख देगी और इसको रिमूव कर देगी, लाइक इसको भी रखे रख देगी, कुकू इज वेरी क्लेवर, वो ना क्या करती है, बीच में अपना एग जाके रखती है, सो व्हेन द क्रो विल कम ही विल काउंट, शी विल काउंट अगेन 1 2 3 4 5 6 7, तो वो क्या करेगा, साइड वाला जो है उसको थ्रो कर देगा, yes, क्योंकि a particular mother or the will know how much investment of energy it can be, so it's a kind of parasitism, ये अपने एक्स को या अपने बेबीज को इसके नेट ग्रो कर रही है, yes, it is a kind of parasitism, इसमें क्या होता है, क्रो अपने ही उसको गिरा देता है, yes, cuckoo keeps their eggs in that in between that, ठीक है, चलो नेक्स्ट we'll shift on the, हाँ parasitism में इतना more than enough है, competition, कंपटीशन ही रह गया ना, yes, pick the heading competition. It is a process in which it is a process in which both both intraspecies and interspecies interact with each other. It is a process in which both intraspecies and interspecies interact with each other. Competition also occurs mainly in intraspecies. Competition also occurs mainly in intraspecies because of almost sharing the common resources, such as habitat, niche, NICHE. Yes, this is something we have to talk about in the community ecology. Niche, food habits, and also the partner, and also the sexual partner,
full stop. In such kind of interactions, in such kind of interactions, आप लोग ये लाइन ऐड कर सकते हो ना कि इंट्रा में क्यों हो रहा है और इंटर में क्यों हो रहा है. इंट्रा में बिकॉज ऑफ दैट मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल कॉम्पिटिशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी के कारण. और आपका जो इंटर में हो रहा है वो फूड के कारण, जैसे कि ग्रासेस, ग्रासेस आर फीड बाय योर बोथ काउज, बफेलोज, है ना, डियर, रैबिट्स, लाइक दिस, है ना. बट दे हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स. तो पार्टनर्स के लिए इंट्रा हो रहा है और फूड के लिए या कॉमन, जैसे कि ऑलमोस्ट देयर इज अ कॉमन हैबिटेट शेयरिंग बाय द एलिफेंट, है ना, और मे बी द लॉयन एंड द टाइगर, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज अ कॉमन हैबिटेट. ठीक है, चलो क्या लिखा. इट इज अ type of interaction in which both species ultimately get negative impact, both species getting negative impact as as it is a struggle between as it is a struggle between two or more organism, two or more organism for their survival, food and population growth, for their survival, food and population growth. ठीक है. एग्जाम्पल, इन साउथ अमेरिका लेक्स, इन साउथ अमेरिका लेक्स, इंट्रा और इंटर को डिफाइन कर सकते हैं इफ यू हैव द अमाउंट ऑफ टाइम and limitation of keyword. So please define the intra and inter. We know that. Simply define that and tell the purpose. That's it. Okay. Example: in South America lakes, there was a high competition for zooplanktons. There was a high competition for zooplanktons between the different species. Between the different species, and also in another example of habitat competition, and another example of habitat competition between resident fishes, फूड का ये जू प्लैंक्टॉन्स पे फीड आपके दोनों करते हैं. बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉमन हैबिtat, या फ्लैमिंगो डजंट लिव ऑन द वाटर, on the aquatic, but that is why resident fishes and visiting flamingos, ultimately they are doing competition for the zooplanktons, but not in the same habitat. हाँ, but also different habitats in between. Sorry. resident fishes and visiting flamingos. ठीक है. नेक्स्ट लाइन लिखो. इन कॉम्पिटिशन, हाँ एग्जाम्पल सफिशिएंट. इन कॉम्पिटिशन, the superiority of individual species, the superiority of individual species play sorry, play an important role for win the competition and getting, for win the competition ultimately, for to win the competition ultimately. नेक्स्ट लिखो, क्या कंपटीशन में लिखो. अभी तक तो खैर नहीं पूछा है, बट स्टिल वी शुड हैव प्रिपेयर्ड लाइक दैट. Gauss competition, this thing you will write in the evolution when we talk about that species survival or the new species, like speciation, then you have to write this point also. Gauss competition
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फेस्टिवल खत्म हो गया है। हाँ, तो उससे बाहर आ जाओ सब लोग, जो लोग घर गए हैं या जो लोग का इधर उधर है डाइवर्जन। यस, अभी लग रहा है एग्जाम दूर है। गॉस कॉम्पिटिशंस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, व्हाट डज दैट मीन? गॉस वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है। जनरली ही टॉक्ड अबाउट एक्चुअली बोथ द इंट्रा और इंटर, बट मेनली वी फर्स्ट टॉक अबाउट दैट इंट्रा, ठीक है। व्हाट डिड ही से? एक्चुअली ही सॉ दैट पैरामीशियम, पैरामीशियम कॉर्डेटम, एक पैरामीशियम लिख लो, सिंपल, ज्यादा स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। पैरामीशियम। सो व्हाट दे सी द हैबिटेट कंपटीशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, कंपटीशन जो है वो एक्सक्लूड भी कर देती है। दैट मींस द बेस्ट सर्वाइवल स्पीसीज विल बी, द बेस्ट कॉम्पिटिटर स्पीसीज विल बी लिव ऑन द लैंड। Yes, so ultimately he wanted to see that ultimately he said that yes, it is a negative impact initially, but after the most fit and the survived species will exclude the another one or the population, ठीक है। So ultimately जो longer term के लिए होगा, it is a positive thing. So yeah, it is a kind of extended period के लिए, but he said that. And Gauss का exclusion principle competition में major factor करता है, ठीक है। समझ आ गया? तो he said that suppose that एक culture है, उसमें क्या है, जैसे culture in that disk, तो इन्होंने क्या किया, multiple paramecium grow करे, ठीक है, different इसके। तो he saw that the most best survival, जो आपकी ज्यादा fight कर सकते थे for the resources और for the habitat, ultimately जो low survival people थे, है ना, और हाई सर्वाइवल के कंपेयर में दे जस्ट सर्वाइव, एंड इनकी जो पॉपुलेशन थी लो सर्वाइवल की और मे बी लेस एफिशिएंट की, द सर्वाइवल ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम डिक्लाइंड एंड अल्टीमेटली डिलीटेड फ्रॉम दैट पॉपुलेशन विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल इंटरवीन और इंटरफेरेंस। समझ आ गया? सो दैट इज अ competition. पहले क्या था, competition था, both of the high and the low surviving species were competing for the resource or the whatever the culture medium, and ultimately they excluded them. So that is competition exclusion principle. Yes, write down competition exclusion principle. आईएफएस में पूछा जा चुका है, आईएएस में नहीं पूछा गया, दैट्स व्हाई। लॉट का वर्ल्ड मॉडल भी पता है आप लोगों को, अभी हम लोग करेंगे प्रे प्रेडिटर में। इनिशियली इट वाज आस्क्ड इन द आईएफएस, आफ्टर दैट इट हैज बीन आस्क्ड इन द, यस। He found that two species of Paramecium cordatum and Aurelia both, मतलब सिर्फ Paramecium लिख लो, two species of Paramecium cordatum and Paramecium Aurelia, ये दो species थी, ठीक है। Paramecium cordatum and Paramecium Aurelia were grown together in the same culture medium, were grown together in same culture medium initially, but eventually the population of Paramecium cordatum declines and ultimately eliminated by Paramecium aurelia. Yes, cordatum weak थी, हाँ, and ultimately eliminated by Paramecium aurelia. Full stop. This shows that competition exclude and eliminate the inferior or or the less capable species ultimately and only those species will survive, and only those species will survive who will fit further, who will fit in the scenario, ठीक है, more who will fit and better reproductive capability. Yes, reproductive capacity is one of the basic thing for the evolution. हाँ, जब लोग बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की,
So natural selection में those only, this is one of the factor for the natural selection, कि the species having the more population capacity, reproductive capacity, yes, that will going to be chosen by nature. Yeah, natural selection में reproductive capacity one of the very important factor. ठीक है, नेक्स्ट चेंज कर लो. इन द फर्दर लेवल ऑफ कंपटीशन, हाँ इसके बाद एक और लिखो, गॉस एक्सक्लूजन, गॉस नहीं इसको बोला था, स्टैंडर्ड चेंज करके लिखना. इन द फर्दर level of competition, level of competition, the species have different level of modification, the species have different level of modification and evolved as coexistence, and evolved as coexistence. Full stop. Species facing competition, species facing competition might evolve the mechanism, might evolve the mechanism by changing the feeding pattern, time, foraging, because the limited resource availability, because the limited resource availability, and this process is called resource partitioning. Example, tell me the example of it. Manisha, tell me the example of it बच्चों. Yes, बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल है इसका. It's a very common example. Like which species just changed its feeding pattern or maybe the location, something like that. Darwin finches, है ना? Darwin finches इसी का तो example है. Darwin finches. So these were the birds who has changed their beak, है ना? Initially क्या था, सारे ट्री पे रहते थे या पर्टिकुलर आइसलैंड में रहते थे, ठीक है? So after that they have changed their feeding pattern. Some started, initially everyone was like उस पे थे, क्या कहते हैं, vegetarian. They used to eat the fruits of the tree. Of course tree की भी एक period है, उसके बाद उसकी fruit कम हो गया या पेड़ गिरने को हो गया, तो what they have derived, some of them start feeding on that जो नीचे हुए गिरे हुए fruits है, some of them start feeding on the insects, some of them shifted on the nearby cropland and accordingly they change their beak pattern. So competition इसलिए important है. Competition is also one of the basic characteristics for the natural selection, है ना? जो weak species होती है gradually वो क्या हो जाती है, eliminate हो जाती है if it will not evolve accordingly, और maybe if the coexistence concept नहीं होगा so ultimately वो हो जाएंगे, ठीक है? चलो, competition is finished. Next slide on. कुछ बच्चे क्या, resource partitioning, हाँ एग्जाम्पल लिख लेना. डार्विन फिंचेस, हाँ, ऑन गैलापागोस आइसलैंड. डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइसलैंड. गैलापागोस आइसलैंड. लास्ट लिखो अमेंसिलिज्म. 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 In this interaction, the relationship between two species, the relationship
between two species generally exist close association with each other, generally exist with close association with each other, in which one species harmed, one species getting harmed, while the other species do not, या फिर ऐसे लिख लो, while other species have neutral impact, neither positive nor negative, while other species have neutral impact, bracket में, neither positive nor negative, neither positive nor negative. Example, walnut tree, roots of, example, roots of, yeah, completely unaffected, yes, roots of walnut trees secrete one of the chemical substance which inhibit the growth of the apple trees, in nearby areas, in which apple trees are getting negative impact, while the walnuts are completely unaffected. Any other example of that? Biology, zoology में? It's a very good example. Yes. Any other example? Commensalism का एक नेगेटिव है और एक जीरो है. Very good. Yes, penicillium is a kind of antibiotics, है ना? So penicillium is produced by Penicillium notatum. It's also bacteria. ठीक है, fungi. तो ये क्या होता है, पेनिसिलियम जो एक होता है प्रोड्यूस, इट्स अ प्रोडक्ट सिमिलर एज अ वॉलनट, ठीक है. तो ये क्या करता है, एक पेनिसिलियम प्रोडक्ट यूज करता है. So we know that no discovery of the antibiotics are the was the accidental discovery, ठीक है. So जो फंजाई होता है पेनिसिलियम नोटेटम, आई थिंक बैक्टीरिया होता है जो भी, आई एम नॉट श्योर वेरी. तो वो एक रिलीज करता है सब्सटेंस जिसमें ये तो इसने मान लो सपोज दैट ये सब्सटेंस रिलीज कर दिया, एंड व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर bacteria. That is why it is called the penicillium. It is called the antibacterial. ठीक है, so write it on. Negative impact on the bacteria. Penicillium is produced by the Penicillium notatum. अच्छा, fungus है ना? Okay, thank you so much, Manisha. Write on. Fungi named Penicillium notatum. Sure हो ना बच्चा? Because I'm a little confused. Penicillium नाम तो मुझे पता है, but I'm not very sure with that. Penicillium, हाँ ठीक है, fungi notatum. Thank you. Fungi named Penicillium notatum released या secrete a substance called penicillium, which inhibit the growth of the bacteria, ठीक है. तो ऑफ कोर्स वी नो दैट. चलो लास्ट में लिख लो. अभी चलो लिखते हैं कम्युनिटी, ठीक है. अभी कंप्लीट हो गया आपका पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज कंप्लीटेड. प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप विल टॉक अबाउट सेपरेटली. वी नो दैट प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, predator is getting benefit because of course it is having the prey. तो predator is plus and prey is minus. क्यों भी बाद में करेंगे, because लास्ट में हम लोग जब कम्युनिटी इकोलॉजी फिनिश करेंगे तो हम लोग लॉट का वॉल्टेरा मॉडल करेंगे.
So here, there, then we need to talk about a little bit what are the challenges in the Lotka-Volterra model, that is a resource competition. He did not talk about the food chain or the food web, maybe वहां पे करेंगे, ठीक है? So simple make the heading community ecology, ठीक है? अच्छा देखो, पॉपुलेशन तो समझ आ गया. कम्युनिटी इकोलॉजी इज नथिंग सेपरेट. इसके भी दो तीन कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज कम्युनिटी? जैसे कि वी टॉक अबाउट दिस, दिस इज अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, ठीक है? दिस इज अ फॉरेस्ट कम्युनिटी. देन वी से दिस इज अ ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है? दिस इज अ ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है? देन दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज अ कोस्टल एरिया कम्युनिटी. हम लोग कहते हैं ना कि कोस्टल एरिया में जनरली पीपल लिव देयर. दैट मींस दे हैव अ लिटिल बिट स्पेसिफिकेशन जनरली compared to the your landlocked area. जैसे कि what we know that about the coastal, think of the Indian coastal area. Indian coastal areas में there's a sea breeze, land breeze, some of the area having the, you know, if you go to the Bombay will have always the moisture, always the moisture. Suppose that if you are living in a Delhi, in a Kanpur, UP, Bihar. So what is the difference? How the community is impacting? What we have said that. So यहाँ का जो temperature है, because of the landlocked area, we have that we feel very extreme cold, very extreme, summers. Yeah, but because of the coastal area, यहाँ पे क्या होता है? Because of the land breeze or sea breeze, the temperature variation is not that much large. बॉम्बे की पीपल को अभी का सपोज दैट लाइक आपका एंड ऑफ फेब्रुवरी भी कोल्ड लगेगा, because they did not feel that kind of extreme cold, extreme temperature. Okay, I'm not discussing something like, I'm simply talking about, है ना? तो that means यहाँ की जो community है ना, उनका एक different kind of adaptation है. Suppose that ये तो हम लोग humans की बात कर रहे हैं. Humans are your warm-blooded animals, but if we talk about the overall plants, you know, insects or other kind of animals, ठीक है? Warm-blooded आपके humans और birds, apes, ठीक है? So that is your coastal community. That means, so whenever we talk about in that combined way, so यहाँ पे हम लोग community, I'll talk about the characteristics. यहाँ पे हम लोग then we'll talk about the ecotone. Ecotone is a transition zone between the two community. Then we talk about the edge effect. इन दोनों पे आपको short notes आ रखे, ठीक है? Simply write down community ecology. Write the definition. All the living entities of an ecosystem. All the living entities of an ecosystem form a single biotic component living. Yeah, we do not consider it. Form a single biosystem. Form a single biosystem. Sorry, form a single biotic component. My bad. What is the definition? Write down. ठीक है? और next definition. Or community is an organized or community is an organized ecological unit कर लेना चाहिए था. Preparator करते हैं. अरे don't worry, I'll explain it in a very nice way, so you have the content also, the explanation. Ecological unit in which the organism interact through various associations and interactions, comma, linked to each other in various relationship such as feeding, habitat, linked to each other in various relationship
such as feeding, habitat, etc. Feeding, habitat, etc. and are adapted prevailing physical environment surroundings. Prevailing physical environment surroundings. Prevailing physical environmental surroundings. Full stop. These interactions, association and adaptations, these interactions, associations, समझ में नहीं आ रहा? कोई बात. Associations and adaptations by the organisms provide community its distinct structure. Provide community its distinct structure and influence other characteristics such as growth, development, dominance, species diversity, etc. Species diversity, etc. Next. Next point लिखो. A community is claimed to one or more attributes. A community is claimed to one or more attributes such as first, co-occurrence of a species. Next, reoccurrence of groups of same species. Reoccurrence of groups, co-occurrence and reoccurrence. Reoccurrence of groups of same species. Last, homeostasis or self-regulation. Last ऐसे point लिख लो. The global community is enormous mass of life. बस homeostasis. Next point. Homeostasis. Next point. The global community is enormous mass of life. Is enormous mass of life and can be further divided into continental communities and oceanic communities Next, make the heading characteristics of community. Next, make the heading characteristics of community. Characteristics of community. First, structure. By virtue of understanding
The virtue of understanding by virtue, VIRTU, structure, size, dominance. By virtue of understanding the structure of community, like which kind of a structure it is, है ना? हाँ, large, short, yes. इसी के बाद we will talk about the stratification, dominant, horizontal, yeah, then basic structure कैसा है community का. The structure of the community, the frequency, density, and abundance of different types of species are measured. And abundance, हाँ इसी में आपका species richness यही सब इसमें आते हैं. हाँ, different types of species are measured. Second, dominance. The type of community dominance. देखो इस टॉपिक से मेनली आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं. लॉन्ग नोट्स में ऐसे पॉइंट फॉर्म में आएंगे विच वी आर राइटिंग ऑलरेडी. शॉर्ट नोट्स में जैसे कि इकोटोन आ सकता है ना, एज इफेक्ट्स आ सकता है, हैबिटेट एंड नीश आएगा, देन आपका लॉट का वर्ड. तो आपकी शॉर्ट नोट्स यू विल हैव द कंटेंट, डोंट वरी, विद द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव द कंटेंट्स टू इन योर नोट्स. या जस्ट राइट अंडरस्टैंड डोमिनेंस. क्या लिखा? Among several species present in a community, dominance. Among several species present in a community, a few species exert the major controlling influence, by the virtue of their size, number, activities, habitat, etc., and forming a kind of characteristic nucleus in the community, and forming a kind of characteristic nucleus in the community. According to Clements and Shelford, and these species are called dominance. Yes, according to Clements and Shelford, scientist name here. According to Clements and Shelford, dominance is most commonly expressed in the reaction of an organism on its habitat. Okay, next point, diversity. Next point, diversity. Next point, diversity. Right on. The community show diversity. The communities show diversity, which is composed of different species of plants and animals. It is composed of different species of plants and animals in different groups that may belong to
different groups that may belong to different growth forms or life forms, different growth forms and life forms, and are essentially and are essentially prevailing in uniform environmental surroundings, prevailing in uniform environmental surroundings. Full stop. Diverse communities are healthy and stable community. Diverse community are stable and healthy community. Next, periodicity. Next, periodicity. देखो इसमें periodicity. Yes, the dominant species of the community are generally the dominant species of the community are. अच्छा देखो किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिटी में विच स्पीसीज विल डोमिनेट, कौन सी स्पीसीज होगी, राइट, विच हैव द गुड ग्रोथ, है ना, विच आर बेस्ट टू सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ कंडीशन, गुड पॉपुलेशन। हमने क्या लिखा, डोमिनेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, है ना, इफ दे आर वेरी गुड so they can compete, if they are competing they are winning, if they are winning that means they will have the more habitat, they will have the more food resources, more population, है ना। लाइक जनरली जो विलेजेस या नॉर्मल एरियाज भी होते हैं वहां पे किसको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, जिनका एक काइंड ऑफ अ पावर डायनेमिक्स में जो सबसे हायरार्की में होते हैं, जैसे कि मान लो पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस में क्या, दे हैव द मनी, दे हैव सर्वाइव, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी आता है। yes, that may belong to periodicity, sorry, the dominant species of the community determine various life processes, determine various life processes such as reproduction, growth and respiration, etc., such as reproduction, growth, reproduction, growth, respiration, etc. Full stop. Which define the various life processes annually, which define the various life processes annually at a regular interval in nature, at a regular interval in nature, with their expression and reoccurrence, with their expression and reoccurrence. Next लिखो. Yes, next stratification. Next stratification. अच्छा stratification पे there is a separate notes, so we will define it properly. ठीक है, थोड़ा सा large हो जाएगा, बड़ा होगा ये. Stratification. The ecological communities are arranged. The ecological communities are arranged in a different layer or strata forms, horizontal, vertical, we'll talk about it. In a different layer or strata forms in any specific area slash habitat or ecosystem, in any specific area slash habitat or ecosystem, in a recognizable pattern. Yes, it's not the temporary one. Yeah, generally it is not. In a recognizable pattern with special arrangement of members of the community, with special arrangement, specifically Subbu, with the specific arrangement of the members of the community is called stratification,
is called stratification. Next, organisms are distributed unevenly. Organisms are distributed unevenly unevenly throughout the biotic community throughout the biotic community, which forms one of the major principle of stratification, which forms one of the major principle of stratification in community ecology, which form one of the major principle of stratification in community ecology. Next, एक point लिखो. The stratification in a community, the stratification in a community may be resulted by the following factors, may be resulted by the following factors. First, specific tolerance and adaptations first, specific tolerance and adaptations. Second, chemical reactions. देखो जैसे we talk about, अभी हमने क्या पढ़ा, stratification है ना, उसके पहले we talk about the diversity, फिर अभी हम लोग इसके बाद when we cover the community we will talk about the ecological succession. So when we talk about the succession we talk about that sheer community है ना, जो इनके in between, that means that particular, it's not like that all of the coming from the single species है ना, but that means that particular kind of community can live in a specific kind of environment with the availability of resources and height and size and so many things. तो जब स्टार्टिंग में कोई भी पॉन्ड इकोसिस्टम या स्टोन या ग्रासलैंड बनता है तो व्हाट वी सी अ सिमिलर काइंड ऑफ इधर इन द साइज, हाइट, स्ट्रक्चर टाइप ऑफ कम्युनिटी ग्रो, जैसे कि ग्रासलैंड में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ग्रासेस कैन बी ग्रो but almost they are almost they can survive in a similar kind of community or a similar kind of climatic or whatever the available resources. ठीक है, उसको कम्युनिटी बोलते हैं हम लोग. ओके, यस. फर्स्ट, स्पेसिफिक टॉलरेंस एंड एडाप्टेशंस. सेकंड, chemical reactions taking place between the byproducts and physical stratification, between the byproducts and physical stratification. Next, other organisms take up third है ये, हाँ, other organisms take up temporary or permanent residence as a direct response of initial residence ठीक है. स्ट्रैटिफिकेशन हो गया. शॉर्ट रूट्स, अभी we'll divide the vertical and horizontal. Next, write down. For example, in natural forest community, as per the height structure of the plants, the forest community is arranged. Yes, the forest community is arranged into a number of strata or layers. That is a stratification. ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है यूपीएससी का. What is the stratification? Yes,
तो आपके एनसीईआरटी में लाइन है वर्टिकल अरेंजमेंट, तो वही आपका स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था. Whenever you see the PYQs है ना prelims के, you will get the question stratification. Yes, there's a question. ठीक है, arranged into number of strata or layers such as grasses, followed by shrubs, and bushes, then smaller trees, and then large and tall trees, ठीक है. This fractionation in the community, this fractionation in the community is because the caused by the gradation in external community, gradation in external environmental factors, and also कौन से होते हैं external environmental factors, just temperature है ना, लिखो external environmental factors such as temperature, light, precipitation, humidity, bracket close, and also internal interaction and ability. Of course, ट्री का अगर ग्रो कर रहा है तो सपोज दैट कोई लार्ज ट्री है, सपोज दैट सिक्यूआ और मे बी यूकेलिप्टस, so that will not grow into the near to the surface, no, that will grow. तो internal ability भी है और interactions भी हैं. So because and how the internal interaction, because of such large trees, है ना, so many epiphytes grows in the forest community because they require the sunlight, है ना. We know that about long day plant, short day plant, so they require the sunlight, so they have to why they have, like how they have to reach, because of that support of sun, because to reach the sunlight. Yes, that is internal interaction to interaction and ability. First off, as different strata or layer of forest community, ऐसे ही आपका ponds में भी होता है, ठीक है, आपका euphotic dysphotic zone, ठीक है. Yes, as different strata or layer of forest community. देखो, while we are making the notes ना, we are also having the concept, तो you cannot do the ratification exactly यही point जाके लिखना है, but ultimately जब भी stratification का concept आएगा, because we are explaining it, so you can directly write like that, है ना. Exactly. क्या लिखा, different strata or layer of forest community receives different degree of light intensity, temperature, etc. ठीक है. लास्ट पॉइंट लिख लो, द स्ट्रैटिफिकेशन इन कम्युनिटी कैन बी डिवाइडेड, द स्ट्रैटिफिकेशन इन कम्युनिटी, ऐसे लिख लो, द स्ट्रैटिफिकेशन इन कम्युनिटी मे बी horizontal, and vertical, in both terrestrial and aquatic habitat, ठीक है. रेस्ट विल डू टुमारो. कम्युनिटी इकोलॉजी फिनिश करके विल शिफ्ट टू द, इसके बाद आपका बायोम बच रहा है, तो बायोम का अपलोड द पीडीएफ, एंड बिफोर दैट बायोम के पीडीएफ के अपलोड के पहले वी विल टॉक अबाउट द इकोसिस्टम
As soon as we are starting about the ecosystem, we'll talk about that food chain, food web, biogeochemical cycle, nutrition cycle, and that's all. Maybe this week, I think before this week, we are going to finish this unit, ecology. Yes. Then we'll start the ethology, obviously. Okay. Thank you, guys.